So double integration, basically it is a very simple concept. Just whatever the integration it is given, so that containing double integration, one must be a constant form a to b, and another one that containing variable. Okay, so suppose variable x we consider and upper limit again in the form of x, दोनों भी सेम वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए. ओके, एंड एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन दैट कंटेनिंग टू वेरिएबल dx एंड dy. ओके, अब इसको अगर मुझे रिसॉल्व करना है, पहला रूल क्या है यहाँ पे, whatever that function, just apply here the integration simply a to b, and the second part that is containing limit. So whatever that limits in the form of variable x, we have to solve that integration function as it is. First we have to apply the opposite variable of this, so that containing x single variable we have to apply with respect to y. Okay, and after that x. This is the first condition. And what about the second condition? Simply we can write a to b integration f of f1 of y and f2 of y. The function may be any kind. Here we can write dx dy or whatever. Whenever solving, then apply the rule. Okay, a to b. First we have to write the second f1 of y and here f2 of y. Again function xy. Then we have to apply here the opposite variable. That means here containing x variable, then we y variable, then we apply them with respect to x, and just simply bracket close and then after y. Okay, this is the simple basic rule. So ये अगर मुझे solve करना है integration, तो ब्रैकेट वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे जैसे रेगुलर मेथड होता है, रेगुलर मेथड से रेगुलर मेथड. ओके, तो जो सिंगल इंटीग्रेशन का रूल है वही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. अप्लाई करते समय एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे. अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो आप लोग सॉल्व, तो यहाँ पे x हमारा एज अ कांस्टेंट रहेगा. ओके, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के टाइम पे x हमारा कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू y करते समय. एंड सिमिलरली द सेकंड कंडीशन दैट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे y कांस्टेंट का काम करेगा. ओके, सो ये कांस्टेंट का काम कैसे करता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे. सो रूल्स में ही कंसीडर कर सकते हैं आप लोग. सो रूल्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन. अब रूल्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन में फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, देखो यहाँ पे. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? सो इंटीग्रेशन के जो भी लिमिट्स अवेलेबल है इसमें वो कांस्टेंट है. दैट टाइम इट डजंट मैटर, आइदर यू कैन सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू dx और विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल. ट्राई करना, जब यहाँ पे पहले x दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दिस लिमिट्स फॉर x वेरिएबल. ओके, लोअर लिमिट c and upper limit d, and similarly here it is a y, then we consider that part, that is these limits for y variable, this a as a lower limit and this b as a upper limit. Okay. Next thing, what is the second condition? That containing the limit in the form of, first it is constant, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, and second it is 0 and this is x variable. Okay, now for that condition we have to apply the integration first with respect to y variable, and after completing that with respect to x variable. It means that we can say this is a limit for x equals to 0 and this is limit for x equals to 2. Okay, and what is the third condition? Here again this is the similar condition, but first is constant, but again second here it is a y variable. Okay, so we can consider this is limit for y x variable. Okay, so this is the lower limit and this will be upper limit. Now again here the first we apply with respect to x variable and then after y variable. Okay, and same matter with respect to, अगर हम x करते हैं that time y variable हमारा constant रहेगा, and with respect to y करते समय x हमारा constant. Obviously that time single variable रहेगा. जब हम first integration complete करेंगे तो वहां से x eliminate होता है, function containing simply y. Okay, तो ये rules है to apply the double integration. Okay, अब कुछ example यूज करेंगे और example से और ज्यादा क्लियरिटी आएंगी डबल इंटीग्रेशन. ओके, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, अगर इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं तो इंटीग्रेशन के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे बोथ द लिमिट्स आर कांस्टेंट. ओके, पहला रूल क्या है, अगर कांस्टेंट लिमिट्स है देन वी कैन अप्लाई एनी वन ऑफ दैट. ओके, सो फर्स्ट वी अप्लाई सपोज x and then y, then we can write this integration value equals to 0 to 1 and 0 to 2. So first x y with respect to x and then after with respect to y, ये हमारा पहला स्टेप बनेगा, फर्स्ट स्टेप. ओके, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एज इट इज एंड अप्लाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली x² by 2 और उसके साथ y एज इट इज.
Okay. We are considering the basic integration rules, 0 to 2. Okay. Dx, sorry, dy only. Okay. Now put here the upper limit minus lower limit in place of x variable. So integration 0 to 1 as it is, y divided by 2, then upper limit. If I am putting this upper limit, that is 2 minus 0 whole square, then what happen? It is very simple one. Integration from 0 to 1, y upon 2 and 2 square, its value it is simply 4. Then this integration can be resolved again, 0 to 1. What is the constant part? 4 by 2 is simply 2, and last it is y with respect to y. So 2, what is the integration? Again y square by 2. Then it is very simple to get cancelled, and upper limit minus lower limit. So minus, sorry, 1 minus 0 becomes 1. So this is an integration value for this particular example. Okay. So in this integration, limits are in the form of variable. Okay. Whatever the function, in this session we taken here the same function, so that the integration part, it is quite simple. So this I solution. So again similarly, the constant first part, that is 0 to 4, second part that is containing variable integration, function as it is xy, and integration first we apply with respect to y now, and then after with respect to x. Okay. तो इस ब्रैकेट को पहले हम डील करेंगे. ब्रैकेट में क्या दिया है? दिस पोर्शन. ओके. सो इसको पहले सॉल्व करेंगे. तो इट इज वेरी क्लियर दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4, इंटीग्रेशन अगर हम एक्स वाई का निकालेंगे, पहले जैसा इंटीग्रेशन है, तो सिंपली वाई का इंटीग्रेशन निकालो आप. तो वाई का आता है वाई स्क्वायर बाय 2 और एक्स एज अ कांस्टेंट उसके साथ. ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में लिमिट है 0 टू एक्स dx. दिस इज कैन बी रिटन एज 0 टू 4. इसको रिसॉल्व करो पहले. 1 by 2 वी कैन टेक आउटसाइड दिस डिनोमिनेटर एंड x into, put the upper limit in place of simply y, so it will be x square minus lower limit is 0, and it is very clear. We can write this integration as a 1 by 2 integration from 0 to 4. This will be simply x raised to power 3 dx. First integration it is over. Then second part of this 1 by 2. Now apply the integration part. So integration of this x raised to power 3 will be x raised to power 4 divided by 4 and limits from 0 to 4. Okay. So this can be solved again. Integration 1 by 2. If I put here the upper limit, then it is 4 raised to power 4 minus lower limit, it is 0. So 0 raised to power 4. That is again 0, or denominator as it is. Now this integration we can solve 1 by 2 simply. 4 raised to power, this means 4 raised to power 4 numerator, that is by 4, and this can be solved 1 by 2. So 4 raised to power 4 means 4 raised to power 3, and then this can be solved. 4 raised to power 3 means 4 square become okay, I'm writing in this manner, 4 square into 4 divided by 2. So we can cancel this, and 4 square is 16 into 2, that is 32. So integration value will be 32. Remember that once one of the integration limits are in the form of constant, then answer must be a constant. If both the integration limit in the form of variable, then your answer again in the form of variable with plus c. Okay, plus c का यूज करेंगे हम लिमिट्स के फॉर्म, वेरिएबल के फॉर्म में. ओके, अगर नहीं लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर. Okay, so this is your second. I hope this video will like. If you are new, then subscribe. Any questions, queries, then you can put in our comment section, and try to share and simply follow our channel. Okay, another one examples we can see. Third one, integration and the limits are in the form of, suppose 0 to 1, 0 to y. Okay, xy function again same, dx dy. Now simply we can solve this integration very simple manner. So this integration so first I am writing 0 to 1, then second integration 0 to y, x into y with respect to, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे y वेरिएबल है, दैट मींस यू हैव टू अप्लाई. ओके, यहाँ पे
जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करना है जब वेरिएबल फॉर्म में लिमिट्स होंगे। ओके, सो ये ध्यान देना है डबल इंटीग्रेशन में। सो इसके अकॉर्डिंग हम विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे x आना चाहिए, या नहीं होता तो हम पहले x लेंगे, यहाँ पे एंड देन आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, सिंपली सॉल्व दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। Integration of this part with respect to x means simply calculate the x, and it is x square by 2, y is constant, this one. Okay, now put the integration limits 0 to y, and then after this with respect to 1. So integration from 0 to 1, y by 2 is a constant, and integration में अभी लिमिट पुट करेंगे, that is in the x variable. So x में क्या पुट करेंगे, y, तो y square minus 0 with respect to, then this integration part, rewrite this 0 to 1, simply ये y raised to power 3 बनेगा हमारा, और डिवाइड में 2 बनेगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y बाकी है। So this integration again we can solve. Integration of y raised to power 3 become y raised to power 4 divided by 4 and into 2. Limits are what? 0 to 1. So this integration is basic kind of the problem. So if I put upper limit, then it is 1, minus lower limit 0, then remaining part is there. So it is simply r equals to 1 by 8. Okay, so this integration it is what? 1 by 8. Always remember, if any one of the integration part containing constant limit, okay, constant limits, then answer must be constant that doesn't containing plus c. Okay, I hope this video will help for the double integration. Again I tell you, like these videos. If you like, then subscribe channel. Any questions you can put in our comment section. Now try to share with maximum with your friends, and simply follow our channel. Happy learning.